The third element in the business model canvas is generally आपके चैनल्स आपके बेसिकली वो तरीके हैं जिससे आप एज अ बिजनेस अपना वैल्यू प्रोपोजिशन अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और आप किस तरह से करते हैं, ईच कस्टमर हैज ए जर्नी। आपको फॉर एग्जांपल जूते खरीदने हैं, आप पहले पता करेंगे कि मार्केट में कौन सी मॉडल्स, कौन से वर्जन्स, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो यू विल गेट सम अवेयरनेस, देन यू विल से कि जी बाटा और सर्विस ये दो ब्रांड्स हैं, इनमें से मुझे चूज करना है। यू विल प्रोबेबली ट्राई टू इवेल्युएट विच वन इज बेटर फॉर यू। फ्रॉम दैट इवेल्युएशन यू विल डिसाइड दैट मुझे एक्चुअली परचेज कौन सा करना है। And then after the purchase, and that also means that you will be thinking, okay, should I go to the shop and buying it from there? Should I order it online? Should I pay for it in advance? Should I pay for it once it gets delivered? Delivery kaise hogi? Ye sari cheezein. And then after sales, so if something doesn't fit, can I return it? Can I exchange it? This becomes more complicated when you have a technology product, because you need to see कि आपने कितनी after sales service देनी है, आपने किस तरह से engage रखना है customer के साथ। But your channel, which means essentially your communication, your distribution and sales, are all dependent on your customer type or your stakeholder type. And in that context, आपके own channels क्या होंगे, आपके partner channels क्या होंगे, direct कौन से होंगे, indirect कौन से होंगे, all of these you think about from the commercial point of view, specifically because these are a cost to you. आप जैसे ही दुकान खोलते हैं, इट्स अ कॉस्ट। आप ऑनलाइन कोई बहुत मैसिव वेबसाइट बनाएंगे, दैट इज अ कॉस्ट। वुड यू जस्ट रादर बिकम अ पार्टनर टू दराज? yes, less cost, but does it even make sense to be on Daraz if you have a solar product or a solar system? Because Daraz पे शायद वो वाला कस्टमर नहीं आ रहा जो आपकी सेगमेंट, टारगेट सेगमेंट है। सो थिंक ऑफ योर कस्टमर, थिंक ऑफ योर स्टेक होल्डर। आपके स्टेक होल्डर की जो ये जर्नी है फ्रॉम अवेयरनेस टू सेल्स एंड देन आफ्टर सेल्स, how does that, how is that flowing, and what you need to do at every step? Because इसमें एक कॉस्ट ये भी होती है कि if you have a customer that only wants to pay online, you will have to integrate an entire online payment mechanism onto your website. And what that means is that that's a cost that you will have to bear as well, right? So you'll have to think about all of that. And हम impact point of view से देख रहे हैं, then I need to understand that कौन से channels ज़रूरी हैं मेरे value proposition को adopt करने के लिए. If I don't need a sales channel or a distribution channel, if it just needs to be more focused on communication, and then what are the different channels? Maybe I need multiple channels. I need a different channel for my sponsor or my government partner. I need a different channel for my, जिन लोगों को मैंने educate करना है, जिन लोगों को मैंने बताना है इस चीज़ की ज़रूरी क्यों है. I need a different channel to educate even some retailers. So for example, there was there's a company in general जो ये लाइट, सोलर लाइट्स पे या बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए काम करते हैं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग इस तरह की करते, distributors will actually get a higher margin for keeping their product than what they get from a traditional product. क्योंकि normally impact product जो है वो ज़्यादा देर, it's a slow moving good. It's not like a t-shirt or a Maggi noodle or a Sunsilk, which is like a fast moving good, right? So slow moving good है, उसके लिए फिर पूरी margins जो हैं वो change हो जाती हैं. So again, मेरे customers जो पैसे देंगे, मेरे beneficiaries जो use करेंगे, उनके लिए कौन से channels ज़रूरी हैं to reach them, to retain them and grow them. Customer lifetime value. मैं एक दफा कस्टमर को सेल करूं, so the basic concept is every time I sell to a customer there is something that is called a customer acquisition cost. ये वो cost है जो मेरी sales और marketing की होती है. I want to make sure that whatever cost I incur, मुझे customer उसका 3 times return दे. बेशक वो customer मेरे पास 5 महीने रहे, 5 साल रहे, 15 साल रहे, जो मैंने मार्केटिंग और सेल्स में कॉस्ट खर्च की है उसकी एटलीस्ट 3 times मुझे रिटर्न मिले उस कस्टमर से. सो इफ फॉर एग्जांपल दिस कॉस्ट इज 5,000 रुपीज एंड योर कस्टमर डजंट रिटर्न 15,000 टू यू, दिस कॉस्ट इज अ सम कॉस्ट. मुझे ये मिनिमाइज करनी है. सो व्हेन आई एम लुकिंग एट माय इम्पैक्ट चैनल्स और चैनल्स आल्सो फ्रॉम एन इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव, मुझे रिटेन, ग्रो, ऑब्वियसली अगर आज 5 कस्टमर्स हैं मुझे कल 10 कस्टमर्स चाहिए. उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस तरह से होगी. So just an example, Amazon का आपको पता है, very big online seller. They started off with a bookstore and now they've become like selling everything and under the sun, right?
Amazon built its back end for its website, amazon.com जो उनका स्टोर है, वो इतनी ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की सर्वर्स में या बैक एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस में, दे रियलाइज दैट they could actually offer web services, जो उनकी hosting services हैं, AWS, Amazon Web Services, you must be aware of, जो वो अपने sellers को भी sell करते देते हैं, and then for startups also they give you some cloud credits that you can use to host on the Amazon website, right? They are only able to do this because they've already made that investment in their servers and backend. उनको कोई extra cost नहीं लगी ये नई business offering देने के लिए. But this was an entire new vertical that got created, and that got a lot of different sellers and young startups from different part of the world to be able to come on the Amazon platform with the AWS services. So again, I'm trying to use different channels to get more customer, but I also need to see what is the cost effectiveness kahan se hogi, mujhe optimal revenue generation kahan se aa raha hoga. So even if I'm trying to make an impact, I can't let go of the business element of what I'm trying to do. इसमें आपको हर point के ऊपर maybe you need a different kind of a channel altogether, right? So यहाँ पे आपके channels फर्क होंगे. How do your people find out about the product? Delivery channels अलग होंगे. After sales में how do people connect with you and so on. And we haven't really gone into the details of market segmentation because that's another chapter altogether. But जिस तरह से आप market segmentation करते हैं कि जी ये मेरा customer segment है, उसी तरह से आपको इन्वेस्टर की स्टडी कर कर आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा इन्वेस्टर है जो इम्पैक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है. एंड देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ देम ऑल टुगेदर. These are the investors who will not put money if the business does not have an impact or an SDG focused. Right now, as the world is right now, मैं आजकल परसों की बात कर रही हूँ, दो बहुत मेजर चीजें हुई हैं. One, there is a massive climate emergency which people are realizing day by day, और वो बढ़ती जा रही है. And the second thing, Silicon Valley Bank has just collapsed. And Silicon Valley Bank के collapse का आपको I hope idea हो. It's a very large bank in the Silicon Valley with a lot of startup founders had put their investment money in it. And how that is impacting, it's almost impacting, at least in the Silicon Valley and across US and UK and EU, 80-90% of the founders have been affected. Right now, the only people whose money is safeguarded is the people or those startups जिनका climate tech में investment था. Because वो इतनी massive emergency है, the SVB founders, UK government also, कल ऋषि सुनाक जो prime minister हैं UK, उनका भी interview था and couple of others as well, and they have said that regardless of what happens, जो वो startups थे जो climate पे काम कर रहे हैं, climate tech के अंदर जो हैं, उनका पैसा safeguarded है. The governments of the world will make sure that that money comes back to them. बाकी सबका पैसा आएगा जब SVB liquidate होगा, assets जो भी उसकी format होगी. There was also some news that SVB was acquired by JP Morgan. No, not JP Morgan. I've forgotten, but some other very big group has acquired SVB, primarily with the intent कि climate tech ventures जिनके पैसे उस बैंक में रखे हुए हैं वो safe हो. So for you, what I'm trying to say is that the world is changing. It's no longer सिर्फ business या customer traction होगा. There are things like patient investment, patient capital that focus on 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका impact होगा, revenue आपका बहुत देर से आएगा. So you need to study really well in the market, look around. Please don't go just because आपको 4 VCs का नाम पता है ना, and Pakistani VCs do not invest in impact, not a single one of them. तो आप फंड रेजिंग के लिए इस पूल को छोड़ें. आप ये देखें कि विद इन पाकिस्तान what are the other alternative funding sources you can latch on to. Some of them are your grants and competitions similar to the one you are participating in right now. HEC की बहुत अच्छी grants हैं जिसपे I mean the money is not a lot but it starts you off. ठीक है. There are other competitions. Corporate sector के अंदर K Electric करवाता है, Shell करवाता है. उसके बाद there are other things outside of Pakistan. The UAE and Saudi Arabia are up and coming markets, and they are very interested and they are very keen to develop business as well. Explore those markets, explore those investors, and the bottom line is you need to do your homework. You will need to spend a lot of time. जितना टाइम आप अपनी impact calculation पे लगाएंगे ना, शायद उतना ही टाइम आपको अपनी investor segmentation और identification करने में लगाना पड़ेगा. Short price. Sorry, you're welcome, Imran. Junaid, the earth short price जो है ना, वो हमारे किसी स्टार्टअप के बस की बात नहीं है. It will take us another 10 years. जो उनके फर्स्ट और सेकंड राउंड के जो विनर्स हैं, ये वो लोग हैं जो 2015 और 2014 से अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं.
So one of the winners of the first Earthshot Prize is a friend of mine, Vaitya. She has a hydrogen, basically a startup called Enapter. वो hydrogen electrolyzer बनाते हैं. उसने अपना 2012 या 13 में काम करना शुरू किया था, and her technology got developed a few years back. She raised her first large fund in 2019 or 20, because I've been in this space in Pakistan for 5 years. So at this rate, I'm unfortunately don't see any of our startups getting the Earthshot Prize. Last year, जो second Earthshot Prize था, उसमें एक winner है Dr. Sebastian Grove. He's been working on his swarm model in Bangladesh since 2012. हाँ, 2012 से काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर. PhD उनकी उस पे थी और अब जाके उनका कुछ चीज बनी है. My question is very simple. How many of you will cut it out for those next 3 years, 4 years, 5 years, which will be the worst? पैसे नहीं होंगे, challenges होंगे, product develop नहीं हो रहा होगा, customer नहीं हो रहे आ रहे होंगे. When I'm talking about opportunities of grants and investments, this also comes to people who are going to stick through and cut it out through the most difficult times. हमारे पास तो हर रोज एक नया आइडिया आता है ना, जिसके अंदर जो नई डेवलपमेंट की फंडिंग आ गई ना, वो मेरा नेक्स्ट बेस्ट आइडिया है. Doesn't work that way. You will also not get that funding because consistency nahi hai. So revenue streams, again, the idea is that आपका commercial focus है. आपको ये देखना है कि आपका revenue किस तरह से आ रहा है. आप asset sales पे लाएंगे, usage पे लाएंगे, subscription लेकर आएंगे. And then for the impact point of view, you need to look at the whole 9 yards, just not the customer, also based on long-term value, also based on other beneficiaries, other people who will be impacted. आपकी revenue streams will be different for different categories, right? So मैं आपको भी थोड़ी देर पहले model बता रही थी. So the Sindh Solar Energy Project, for example, works on this model. They have a component जहाँ पर वो off-grid के अंदर rural areas में energy supply करते हैं. और उसका उन्होंने फॉर्मूला इस तरह से किया हुआ है कि लेट्स सपोज किसी के घर में सोलर सिस्टम लगना है, and that person goes and they will get their evaluation done and they say ठीक है, you are eligible for it. उनको 10% पेमेंट करनी होती है खुद से. 90% उसकी पेमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फंड्स और ग्रांट्स दैट दे हैव. वो 90% पेमेंट जो सोलर इंस्टॉलर है उसको किस तरह से मिलती है? They will get some in advance to put up the system, and then the rest of it, which is almost 60%, will come once the government takes feedback from the customer and the customer says everything is okay, everything is working. फिर बाकी पेमेंट जो है after a certain amount of time results based focus के ऊपर उस सोलर सप्लायर या उस सोलर कंपनी को मिलती है जिसने सिस्टम इंस्टॉल किया होता है. Now this is a model that is giving relief to the customer, but as a business, can you sustain yourself? Can you be okay in that time, 6 months, 8 months, जब तक आपको पेमेंट आ रही है, क्योंकि आप बहुत बड़े ऑर्डर पे काम कर रहे होंगे. I think there are only 3 or 4 suppliers that are shortlisted for this program. Would you be able to continue your operations without any challenges? So you, again, in the context of your beneficiaries, you or your stakeholders, you need to think about exactly this. Patient capital की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से इन्वेस्टर आपको अपना कस्टमर समझ के पेशेंट कैपिटल देता है. तुम पैसे ले लो अभी, 5-8 साल के बाद रिटर्न आएंगे, तुम मुझे उस वक्त वापस करना. Whether it's a debt finance or an investment, they see the returns coming back after 10-12 years. How do you see the returns coming back? Is your product such that you can see something immediate? You see that this is my first line of business. इसमें जो है वो पैसे फौरन वापस आ जाएंगे. This is my second line of business. It will take time. So for example, you're a waste management company. आप उठाते हैं solid waste भी उठाते हैं, liquid waste भी उठाते हैं, wet waste भी उठाते हैं. आपको ये पता है कि जब आपने सब चीजें अलग कर ली हैं, तो the solid waste or the recyclables, if you can separate everything, it's easier to separate. और आप उनको अलग करके recyclables sell कर देंगे, you will get some revenue. Wet waste के लिए you will probably have to put it through a composting cycle and then figure out कि आप उससे क्या organic product बना सकते हैं. How much time would that take? Is that a different revenue stream for you? Is that a different business opportunity for you? Does that have a different customer or a beneficiary segment? Do you want to create some interesting models around it? For example, one of the startups in this waste management space, what they do is they collect waste from corporate sector. तो उनकी एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर के अंदर है, वो एग्री वेस्ट उठाते हैं. उनका मॉडल वहां पे ये कि जी हम आपकी एग्री वेस्ट उठा लेंगे, हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम वापस आपको लाकर वो दे देंगे. So there is actually a kind of a barter going on that we will pick up your waste and we will give you the compost. But then you need to figure out in between कि इसमें कौन सी costs हैं जो ऊपर से अलग से आपके time और effort के लिए आएंगी.
how will you price this package to the company or your customer? So you need to think about all of these depending on, again, market conditions क्या है, किस तरह के projects चल रहे हैं, किस तरह की government से आपको क्या support मिलेगी, what is the current trend with the funds or grants that are coming in, what are the kind of thematics people are thinking on. आप climate impact या climate tech space में, but the ultimate goal is not only going to be climate. Can you find any additional impact streams? Health tech हो गया, education हो गया, gender हो गया, empowerment, consumption, production, something that can be a periphery to what your mainstream focus is, ताकि आपके पास थोड़ी सी wider net हो for getting, support and funding and other things that you might need.